Okay, guys, let's just try to repeat everything and write the names of the textures that you have used, because if you will write them in your write-up, it will be really common, like, really good, and it will uplift your things. So first, crumpling, crumpling, crumpling. Crumpling means you take a paper, crush it with your hands, and then stick it. Newspaper, tissue papers are the best thing to work with. This is called crumpling. You try to use it in a shape, don't fill it completely. The second one is Chinese folding. This तो हम बचपन से कर रहे हैं, Chinese fan बना रहे हैं. So just folding paper in small with small centimeters in depth, or in width. It's called Chinese folding. You can turn it, stick it as a round, you can place it flat, you can do it on a circle, you can do it on any place. Okay, ma'am, is it necessary to make? No, you can make anything from crumpling. It's your choice. The method is called crumpling. You can do anything with it. Third one is fringing. Don't take a strip and cut like singularly. Fold it and then cut. It will save your time. Okay, so this is called fringing. 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 Now the next one, this one that I was telling you, is called kirigami. Kirigami. Kirigami, where you cut and you take it out, which is you fold, cut and fold. There is no extra thing that I am pasting. It's all the same sheet. Did I paste anything? No, I just cut and I took it out. So this is called kirigami. Origami is called folding, where you do not paste anything. That's called origami. Kirigami is when you cut and you take out these kind of illusions, or any kind of craft that you do with cutting. Kirigami. Now the last one I want to show you. Okay, this one is an easy one. I can show you this. So collaging, like we have all done it. Try to take all the cut pieces that you have left of your material, use that also. Try to work with waste also, things that you don't need, collage it together to make this kind of surface. Collaging. Okay, last one, layering. I took the shape of leaf and I stuck it together to give the surface of layering. Okay, this is also layering, where I took a lot of fringes and I stuck them on top of each other. You can do it in circular manner. Yesterday I showed you some pictures in which layering was done. Take a lot of fold cylinders and stick them together. So try to use these kind of techniques right now for the emotions that you have used. And that emotion should show, like when I show you this, you should be able to say, yeah, it's confused, or it's different. So whichever emotion you have used, try to make the texture of that quickly. Anyone who is finished? Because it's been 40 minutes, 30 minutes. Exam Yes, 2 घंटे का ही होता है, उसमें तुम I have used the kirigami fold texture to express anger. Okay, Aditya, but I can't see your video. You need to switch on the video. Yeah, just Yes. Piyush, दिख रहा है तुम्हें? Yes. Yes, good. This is kirigami. Good. And what is the emotion? anger. Anger. All spikes up. पर Like black. anger में आदित्य पिंक All कलर spikes होगा up. कि रेड? मैम रेड नहीं था तो इसलिए मैंने मतलब नहीं ये यूज किया और बेस ब्लैक दिया. ओके, तो उस एंगर में और चीजें डालो, स्टैंड करो ब्लैक कलर के स्पाइक्स. ये बहुत सिंपल हो गया ना. अगर ऐसा भी कुछ साइड में डाल सकते हो. हाँ, एंगर के लिए थोड़ा सा और. I can use orange in case of anger, right? ऑरेंज कलर देख के एंगर फील होता है कि रेड ब्लैक डार्क कलर देख के एंगर फील Actually, होता है? राइट, यस. ऑल्सो यू शुड नो कि
अगर मैं तुम्हें बोलूं 50 में से खुद को मार्क्स दो तो तुम्हें लगेगा तुमने थोड़ा कम काम किया है. When you have the opportunity कि तुम और चीजें ऐड कर सकते हो उसमें. अभी इन्विजिलेटर को क्या पता चलेगा तुम्हें एक ही टेक्निक आती है, वो है बस कटिंग और ऊपर करना. राइट. सो ट्राई टू इवॉल्व. उसको पेंटिंग की तरह सोचो और उसमें ऐड करो, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. मतलब एंगर में तुम ऐसे क्रॉस साइन बनाओगे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट में बनाओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. गुड फर्स्ट अटेम्प्ट. एनीवन एल्स जिसका हो गया है? अनम्यूट, रेज हैंड. साक्षी. यस मैम. बॉन्डिंग. Bonding. 1 second. I will just give me a minute. Yes, I can see it. Good. Good. इसमें थोड़ा you can, ये जो तुमने चेन्स बनाए हैं वो सारे डायरेक्शन से सेंटर में आ सकते हैं. अभी तुमने 4 कॉर्नर से लिया, राइट? साइड से भी लो, पूरा पूरा साइड से भी लो, तो इट विल लुक गुड मोर. ओके. ओके. गुड वर्क. नेक्स्ट. कुछ लोगों को तो मैं देख रही हूँ जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट वॉचिंग. क्या मैं एग्जाम दूंगी तुम लोगों के लिए? डू यू थिंक आई विल कम इन एग्जाम? पीयूष सर आएंगे? ओके. एनीवन एल्स? जस्ट वेव टू मी एंड आई विल नो आई हैव टू कम टू यू. या चैट पे लिख दो. ओके. विधि. यस विधि. Mom, I tried making illusion doing Chinese folding. Okay. Correct. पर तुम्हारा Chinese folding मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, now I can see it's black. That's why it's not visible. Yeah. Good. 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 It's a small piece, but good, simple, defined. वो जो Chinese folding है वो सारे black में दो. Do it in every piece of black. ओके. और वो व्हाइट वाले पीस में भी करो. दोनों में ट्राई टू स्टिक ओवर इट. ठीक है. मैम आई हैव ट्राइड समथिंग एल्स. समथिंग एल्स की तो क्लास है ही नहीं. क्या ट्राई किया तुमने यार? 1+7 Pro नाम भी नहीं डाला है. टेल मी वेयर आर यू? यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. Like this. Like this. Yeah, good. That shows जॉय. बट वो जो तुमने टेक्सचर बनाया ना, उसको क्या नाम है आपका? my name, ma'am. Yes. Actually, I don't know Hindi. Okay. My What's name is Neela. Sheila? Neela. Neela. Okay, Neela. Okay, you bought an Amazon kit. Now I remember I spoke to you. Okay. So first of all, change your name. Right. Okay, ma'am. Neela. Okay. No 1+7 Pro. And secondly, this texture that you have made is very good. But if you are using it for joy, तो वो पूरे पेज में भरना पड़ेगा in a circular form. बाहर ग्रीन डालो, अंदर ऑरेंज, फिर पिंक. So show the colors of joy. ठीक है? Thank you, ma'am. You're welcome. Next. Okay, till the time you all are doing this, anyone has any question that Piyush and me can answer? Yesterday, so you all had so many questions. You can put it in the chat and we'll answer that for you till the time you're working. कोई भी डाउट सिचुएशन टेस्ट को लेके that we can clear, please. प्लस जिसको भी है सेशन रंजिम. Sorry. Krishna is also here. Yes, Krishna sir is also here. Anyone? कोई भी doubt? Ma'am, I want to ask something. Yes, Isha. Ma'am, like I read a question and we had that something is inspired from CD and some camera lens. So what does it means? मतलब material use उन्होंने different दिया हुआ था, but उन्होंने बोला था कि inspired by this. So I'm little bit confused. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. जब वो कहते हैं मोमेंटो ट्रॉफी बनाओ पेपर से, वायर से, क्या मार्केट में पेपर और वायर का मोमेंटो मिलता है? No ma'am, actually मतलब मेरे पास क्वेश्चन ये था कि जैसे उसमें लिखा था कि इंस्पायर्ड बाय
camera lens and And CD. CD, And huh. materials used whatever you have material. Yes. So that means what is the quality of a CD? CD का क्या shape होता है? Hard, ma'am, circle. सर्कल, हार्ट, वो कलरफुल रहती है, रेनबो कलर्स होते हैं, देखिए वो 7 कलर्स Yes, लाइट ma'am. पड़ती है, Yes, तो ma'am. ये हुआ सीडी के एलिमेंट्स, राइट? इट्स अ सिंपल डिस्क, सर्कुलर, and it's colorful and other elements that you can come up with when you brainstorm. And तुम्हारा हुआ दूसरा कैमरा की कैमरा लेंस? Camera lens. कैमरा लेंस, how is कैमरा लेंस दिखने में? मैम कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है. Glass, right? Glass, transparent. Okay. Yes. So these are the Yes. elements that you are coming up with when you are brainstorming. What we did now, talking, it's just brainstorming. Yes, इसकी जगह we can write also CD से क्या क्या words निकल के आए, कैमरा से, लेंस से क्या क्या words निकल के आए, वो एलिमेंट से इंस्पायर होके हम लोग फिर प्रोडक्ट बनाएंगे. तो हमारे प्रोडक्ट में वो कलरफुल चीजें, ग्लास जैसा इफेक्ट, मिरर जैसा इफेक्ट, यू नो, शायद बीच में हम लेयर्स लगा सकते हैं, जैसे कैमरा लेंस में लेयर्स होती है, राइट? सामने कुछ और दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ और दिखता है, राइट? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल अगर बोले नेचर से इंस्पायर होके कुछ बनाना है, तो नेचर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लोरा, फौना, ट्रीज, या क्लाइमेट चेंज भी होता है, एनवायरनमेंट से तुम डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर, ये सब भी हो सकते हो इंस्पायर, and you can make something. So basically when they say get inspired from this, मतलब उसके elements को use करके main product में वो चीजें add करनी पड़े. ठीक है? okay. Thank you, ma'am. You're welcome. Hello, ma'am. Chitra speaking. Yes, Chitra. Ma'am, I made this peaceful. Good. I can see that you have used fringe. This is, yes, ma'am, fringing, and I have shown the feeling of soothness, the feeling of peace when you see nature around. Good. This is also a good concept. I have one question for you, Chitra. Blue is more Yes, peaceful ma'am. or yellow? Blue, yellow, I mean, both are equally peaceful. I Okay, now say. light blue. Because in day it's like you see more of yellow and greens, and at night it's more of blue. So peace is like it exists in day and night as well. Okay, one more question. So I'll say both the colors. One more question for you. Yes, ma'am. Is water more calming or sun? Sure, ma'am. Is ocean more calming or sun? Sun, of course. Sun is more calming than ocean? Water is calm No, than it's like it depends on individual, like what you find more calming. I find day more calming than night. Like night is more stressful. Okay. Now I'll tell you something. This color pattern what you have chosen in good, but universally when we talk about color psychology or color theory, Yes, ma'am. for calmness and peace we take colors like that. Above sea green color is completely fine, right? Sea green and blue, because we get inspired from nature. अगर हम ग्रीन कलर देखेंगे तो हमें यूनिटी, हार्मनी, दिस काइंड ऑफ फीलिंग आएगी. अगर हम ब्लू देखेंगे, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, तो हमें यू नो कामनेस, पीस, दिस काइंड ऑफ फीलिंग आएगी. अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन यू हैव यूज्ड. दिस विल स्टिल पास इन कामनेस, बट अगर तुमने इसमें ब्राइट ऑरेंज या ब्राइट येलो डाला, it will not, if you will use colors of sun or day, it will not be calm. Try to use colors of cool colors which are sea green, light blue, and that will make much better effect. If you try to redo this in green and blue, and you will see the difference, or you know, in shades of blue, dark blue, lighter blue, white, right? Peaceful calmness will have more of white, right? So I love your technique. It's very neat and good job. But try to think of colors in more of universal sense. क्योंकि तुम तो वहां रहोगे नहीं एक्सप्लेन करने के लिए. अभी you can explain and convince me, but there it's your model which has to speak, right? Okay. Okay. Good work. Anyone you. else? Ma'am, Pragya. Akshita, I can see you. Okay, I'll come to you, Pragya. Akshita, yes. Ma'am, I made this for confusion. तुमने उसमें स्नेक भी बनाया है?
हाँ, क्योंकि स्नेक कंफ्यूजन, मतलब स्नेक नहीं है, एक अजीब सा पैटर्न है बेसिकली, वो हाँ, माइंड की मुझे वाइब अच्छा दिखाते लगता हुए। है। हाँ, तो वो जो पैटर्न है ना उसको हर जगह लेके जाओ सो दैट इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। ठीक है, ट्राई टू, वो जितने भी तुमने टेक्सचर्स यूज किए ना, ट्राई टू स्टिल मेक इट लुक बैलेंस, भले ही कंफ्यूजिंग हो पर वो इतना भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जस्ट ऐड मोर। ओके, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। प्रज्ञा, Yes, ma'am. Ma'am, I have made this for energetic. गुड गुड। I've used zigzag or spike pattern and neon pink या to show energetic. good. The whole thing is very good. Energy it's represented very well in spikes. You can use red color instead of pink. If you don't have pink, and dark color is also fine, but energy red more, but the whole composition looks very good. Anyone else? Thank you. Quickly before we end the session, Ma'am. because I'll give you homework. Yes, ma'am. Yes, Pratiksha. Ma'am, I have made this happiness. Yes, but still it looks confusing क्योंकि तुमने ऐसे कोलाज टाइप बनाया है, राइट? सो व्हेन इट्स Yes, हैपनिंग, ma'am. ट्राई टू इसमें आउटसाइड में रेड या डार्क ऑरेंज ऐड करो। आउटसाइड जो Okay, व्हाइट ma'am. थोड़ा है ना, उसमें एक सर्कुलर वे में रेड और ऑरेंज। ओके Ma'am, I मैम पीयूष, थोड़ा ट्राई Yes. करो। ये आकांक्षा, टेल आकांक्षा, इट्स योर टर्न। Ma'am, I used crumpling and more of like a drawing method. If you can see, my topic was anxiety. So this green tree resembles that how a person is happy and all. And this here, I used newspaper because I was not having black paper. So I used newspaper. Anxiety develops when we start overthinking. So this is starting of overthinking and then this black portion. I hope I am able to make it clear. Correct है, it's good, it's very good, well described and well thought of. It's good, it goes with no overthinking. प्लस मैम ये है कि आप लोगों के पास मटेरियल्स नहीं, वो ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की कि हमको कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है। अभी आपके पास मटेरियल्स नहीं है, बट ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके मूड के अकॉर्डिंग वो कलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि काफी लोगों का ना ये कलर थ्योरी पे ही आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब जहाँ पे वार्म कलर या फिर कूल कलर है वो आप सेकेंड पर्सन के लिए बना रहे हो, आपके हिसाब से ब्लैक अच्छा हो सकता है बट किसी के लिए वो ब्लू अच्छा होता है, राइट? तो आपको अपने लिए नहीं बनाना है, तो वहां पे आपको यूनिवर्सल कलर लेने हैं जो कि आप जाके पढ़ो, गूगल करो जाके कि किसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स बैठ रहे हैं, आपको वो कलर्स वहां पे यूज करने, अपने अकॉर्डिंग वहां पे कुछ नहीं यूज करना है। सेकेंड पर्सन कॉपी चेक करेगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो कलर्स को ध्यान में रखते हुए अभी आपने न्यूज़पेपर यूज किया या फिर कोई भी चीजें यूज की हैं, लेकिन वहां पे अभी से माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर मेरे पास ये कलर्स होता, मैं यहाँ पे पिंक यूज करता या फिर ब्लू यूज करता, तब भी आप लोगों का हो पाएगा, क्योंकि अभी मटेरियल वैसे इतना ज्यादा इशू है। तो आप लोग ये प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा कलर थ्योरी की कैसे क्या वर्क होता है। हाँ, और जहाँ तक मटेरियल की बात है तो प्लीज यूज मिल्क पैकेट, चिप्स, लेस पैकेट, एल्यूमिनियम फॉइल, न्यूज़पेपर, मैगजीन कवर्स, ये सब से काम करो, बिकॉज ये सारी चीजें हैंडी होती हैं, एग्जाम में भी आती हैं। ऐसे ट्रांसपेरेंट पेपर मिले तो इससे काम करो, लाइक यू नो एज मच मटेरियल you can collect right now to work with is what you should work on. Okay, now comes our homework part. So everyone, you need to make 5 textures of. Ma'am, I want to show. You can post it in the group, darling. Everyone, you can post it in the group. I'll give feedback. I'll give feedback like I'm giving right now Okay, also ma'am. to everyone. Okay. So A5 size के 5 texture on emotion. 5 textures on emotion for this. Work on this before you work on the memento and trophy question. This is more important to move forward. That class will be repeated again for you. Right now, this is your first and your second session. So please work on paper texture. That is more important. We will take it slowly. Do not panic. We have a lot of time for the exam.
5 emotions that should be really good emotions. Don't take joy, happiness, sadness. A5 size कैसे बनाएंगे? A4 का आधा A5 साइज ऐसे बनेगा, कट करेंगे A4 को आधा और A5 बन जाएगा. ओके गाइस, तो 5 इमोशन A5 साइज, इस साइज पर. Okay. कलर चॉइस प्रॉपर होना चाहिए, थीम सही होना चाहिए, इमोशन से रिलेटिव होना चाहिए. लॉस्ट इमोशन हैप्पीनेस की तरह नहीं दिखना चाहिए. सैड और डिप्रेशन एक्साइटमेंट की तरह नहीं दिखना चाहिए. एंड यूज थिंग्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. मतलब अगर मैं तुम्हें रेड कलर दिखाऊंगी तो तुम इमोशंस बोलोगे, लव, डेंजर, इमरजेंसी, एंगर, ये सब कॉमन है, राइट? सो ट्राई टू यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स. Research, I will put something PDF of color psychology also on the group so that you can take a look at it, and please work. Krishna sir, do you want to say something in the end? Yeah. So carry on. Don't worry. Right now we have enough time. One more thing we have decided: you will have app support also, and recently we started the classes for you guys also. For your senior batch, we have a free advanced classes. So for you also, we will have a free advanced class. So all class. No. Yeah, and I really want to say one more thing. Please stay in a better background. I see some of you. I really like the compose of Akanksha. Like, you know, you can shift your camera a bit. Then, you know, somehow you see the Piyush background, how nicely created the background textures wall, and also can inspire you. Vidhi also have a better, like, you know, location. So see, it's just improve everything, because this is what is required for our profession. This profession need lot of professionalism. You need to be, like, you know, active, calm, presentable. So just improve all this part. Why half of your videos are off? Why don't you, like, you know, before sending, you know, the video remark, I see some of the students saying I'm not comfortable. So how you will be comfortable in NIFT and NID? Huh? So improve all this, because that is what the requirement of your like, you know, industry, and that's we are saying, you know, based on our experiences. All the best. Ma'am will tell you what all things need to require, and that you can even personally ask the ma'am, share your experiences. Okay, good luck. Thank you, Krishna sir. So guys, homework is 5 textures on 5 emotions in A5 size. Please post them on the group you are at, proper pictures, and make sure you are sketching before you jump to your textures. All the best. Thank you, Piyush, for being here with us. Thank you all the students for being here. Thank you, Krishna sir, for being here. Stay happy, stay safe, and stay at home, and keep practicing a lot. And right now, don't move from here. Complete your 5 things, post it on group, and finish the work so that we can move on to the next topic. Okay? Yes, Yes, ma'am. no, thank you. Bye. Anything you Excuse me, want ma'am. to say? Thank you, everyone. Bye bye. Say bye. Thank you. Thank you. Excuse me, Yeah, ma'am. bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, everyone. Bye. Do take care. Bye. Okay. Bye bye. Sign